Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar of class 6 by Brain Root series. And here is a book, children. It's Grammar Glitter Odyssey. And today we are going to start with chapter number 10 of your book. And the name of the chapter is Order of Adjectives. So in the previous chapter, we have learned about adjectives. Here we are going to learn about in what order we can rearrange these adjectives. Means adjectives तो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, लेकिन इन्हें भी लिखने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो किया जाता है. सो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द ओल्ड ब्राउन पेपर बैग लेज ऑन द फ्लोर. सो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओल्ड भी एडजेक्टिव है, ब्राउन भी एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पुराना ब्राउन पेपर बैग है वो फ्लोर पे पड़ा हुआ है. आई एम लुकिंग फॉर अ बिग ग्रीन रेड एंड व्हाइट अम्ब्रेला. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है वहां पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैंने एक बड़े से ग्रीन कलर के रेड और व्हाइट कलर के अम्ब्रेला को देखा. सो हमने पहले बिग लिखा, उसके बाद हमने कलर्स लिखे. इन द अबव सेंटेंसेस मोर देन one adjective is used to describe a noun. So when several adjectives are used together, they are placed in a particular sequence. जब बहुत सारे adjective को एक साथ जो है use किया जाता है तो उन्हें एक particular sequence में रखा जाता है. Generally, we do not use more than 3 adjectives in a sentence. हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा adjectives को use नहीं करते हैं sentence में. We put comma between adjectives if they are equally important. अगर adjectives equally important है तो उनके बीच में हम कॉमा लगाते हैं and give similar kind of information, और एक तरीके का information ये देते हैं. No comma is placed between the final adjective. Final adjective से पहले कोई भी कॉमा नहीं लगाया जाता है and the noun which it describes, और उस noun से पहले जिसको वो describe कर रहा है. So here let's move on to the interpretation. The proper order for adjectives is known as the royal order of adjective. जो proper order है adjective का उसे royal order of adjective कहा जाता है. Here you can see the particular order. किस order में हम adjectives को लिखते हैं, तो पहले आते हैं determiners which are a and the, this, that, these, those. फिर है opinion. Opinion क्या है, great, terrible, pretty, lovely, silly, beautiful, horrible, difficult. तो ये वर्ड्स आते हैं उसके बाद. फिर आता है साइज. एडजेक्टिव का साइज लिखना होता है, जैसे ह्यूज, बिग, लार्ज, टाइनी, एनॉर्मस, लिटिल. नेक्स्ट कम्स द एज. उसके बाद हम एज लिखते हैं, एंशिएंट, न्यू, यंग, ओल्ड. नेक्स्ट कम्स द शेप. शेप ऑफ एडजेक्टिव लिखना है, जैसे ट्रायंगुलर, स्क्वायर, राउंड, फ्लैट, रेक्टेंगल. नेक्स्ट कम्स color, black, yellow, blue, pink, reddish or gray. Origin means British, Chinese, French, American, Greek and Italian. तो अगला आता है origin. उसके बाद आता है material, जैसे कि wooden, silk, metal, paper, silver, copper, cotton, leather. So these are the materials. Next comes purpose. Purpose में आता है writing, cooking, running, washing. And then comes noun, जैसे कि car, table, dress, mug, suitcase, balloon, any noun you can write here. So this is the order, जिस order में हमें adjectives का जो है उसे लिखना है. जैसे पहले determiners आएंगे, फिर opinion आएगा, फिर size, then age, shape, color, origin, material, purpose and noun. So this order we have to follow in this. Now let's quickly move on to the book exercise, which is task. And A exercise is rewrite these sentences using the correct order of adjective. हमें correct order of adjective use करना है इन sentences को लिखने के लिए. So here you can see the first sentence says, give me good 3 reasons why you did not finish your homework. So what we are going to write here? So children, the answer for the first question is, give me 3 good reasons why you didn't finish your homework. Now the next one is, the things live in a blue large house.
So we have to change the order here, क्योंकि पहले large आएगा, then blue will come, color बाद में आएगा. So the answer is the Singhs live in a large blue house. Next, third one, she went for a ride on the red big double decker bus. तो यहाँ पे अब आप देखो हमें ऑर्डर चेंज करना है. सो व्हाट इट विल बी, शी वेंट फॉर अ राइड ऑन अ बिग रेड डबल डेकर बस. सो these are the answers. Rest of the questions you have to do it yourself. So now children, let's move on to B exercise, which is rearrange these sets of words correctly. Smith saw one small, old, round, pink egg of a pigeon. So this is the correct order through which you have to write this. Now the second one is, the chef bought a round white plastic portion plates for the party. So these are the answers, children. Do the rest of the questions, question number 3 to 6 yourself. Now let's move on to C part. Provide at least 3 adjectives for each noun. हर एक noun के लिए आपको 3 adjective डालनी है, but I have written more. So opinion में डाल सकते हैं pretty, little, in size, age में डालेंगे new, shape में flat, color grey, origin Chinese, material copper, and the noun is car. So similarly आपको क्या करना है, सिर्फ 3 adjectives को यहाँ पे fill करना है. It can be any related to a book, related to a building, student, village, shawl, kites और painting. So ये जो words दिए गए, ये जो noun दिए गए, इनसे related आपको 3 adjectives यहाँ पे लिखना है. Whichever you want, you can choose that. उसके according आपको यहाँ पे fill करना है. So do this exercise yourself, children. Now let's move on to provocation. Make sentences with each of these nouns using any 3 of the adjectives. तो ये जो noun दिए गए हैं इनको use करना है. इन nouns के लिए यहाँ से adjectives हमें use करना है. Only 3 we have to use and we have to form sentences. तो girl के लिए हम कौन कौन से noun use करेंगे? Canadian, tall, beautiful. So it could be, I saw a beautiful tall Canadian girl. So here we have used 3 of the adjectives from below. Similarly for ball, garden, book and mug, you have to choose the adjectives from below and you have to make sentences on your own. So do it yourself. So children, now we are going to learn about notice writing. So notice is a means of communication formally with a group of people. It can be used to inform people about various things. ये अलग अलग चीज़ों के बारे में लोगों को inform करता है, किसी event के बारे में जो कि हो रहा हो, and it is also written for something that is lost or found. So here you can see these are the points that we have to follow when we write a notice. So we have to first write the notice in a box. Box हमें बनाना होता है notice लिखने से पहले. फिर हमें नोटिस वर्ड बॉक्स में लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, एंड इट शुड बी एट द टॉप सेंटर. नाउ राइट द नोटिस इन द थर्ड पर्सन. नोटिस को थर्ड पर्सन में लिखना है, मीन्स फर्स्ट पर्सन अवॉइड करना है. मेंशन डेट एंड नेम डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी. जो भी इशू कर रहा है नोटिस को, उसका नाम या फिर डेजिग्नेशन होना चाहिए, साथ में डेट होनी चाहिए. जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं दैट शुड बी देयर, द टाइम, प्लेस and the date of the event should be there. Adhere strictly to the word limit as given. जो भी word limit है उस पर हमें strictly जो है ध्यान रखना है. In case if designation is not given, write X, Y, Z और ABC. अगर designation नहीं दी है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं. So children, notice is a formal piece of writing but is taken to avoid a stiff tone. Now here you can see there is a notice and with marking scheme it has been given. So you are Kiran, school captain of Oxford High School. आप जो है किरण हैं और आप स्कूल कैप्टन हैं ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल बहादुरगढ़ में. राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द पोएम रेसिटेशन. तो आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखनी है पोएम रेसिटेशन के बारे में. That is to be held on 15th of February. So first you have to write down the name of your school, कहाँ पे है वो, that is to be written, then the date. नोटिस लिखना है बीच में इन कैपिटल्स. Then whatever is the heading that you have to write here. So here the heading is poem recitation competition
and then you have to start the notice with all the students are hereby informed, क्योंकि आप सबको inform कर रहे हैं कि poem recitation competition होने वाला है 15 फरवरी को, and year लिखना है, कहाँ पे होने वाला है वो बताना है आपको, and जो participants है वो अपने नाम कब तक देंगे, that date you have to mention. Further information के लिए you have to contact undersigned, and you have to write down your name, which is Kiran, and you are the school captain. So this is how we have to write down the notice, and we have to put this notice in a box. Similarly, there is another example of notice writing. You are Rajiv Kumar, the cultural secretary of Lakshman Public School, Bhilai, and you have to write a notice on behalf of your school inviting all the grandparents of the school of your school to celebrate Grandparents Day. तो grandparents को आप invite करो Grandparents Day मनाने के लिए. So for that, we are going to write down the notice. So same way we have to write it down, read it, and similarly, another notice is there that you are the editor of the school magazine. आप school magazine के editor हैं, and you are going to write a notice on behalf of your school to invite articles, stories, poems, riddles, jokes, etc. as contributors. So आपको क्या करना है, स्कूल मैगजीन के लिए बच्चों से स्टोरीज चाहिए, पोएम्स चाहिए, रिडल्स चाहिए. For that you are writing this notice. So this is a notice, read it and do it like this. Now there are some questions given here in the task corner. You have to read these questions, children, and then you have to write down the notice as we have learned here. So this was all for today in notice writing. I hope you enjoyed learning it. Thanks for watching, children, and I'll be meeting you soon for a new video. Till then, stay tuned.